रिवर्स टेबल के ऊपर दौड़ाओ ना। सभी के टेबल है यहाँ पे बैठने के लिए खाना खाने। The AAIB report raises more questions than it answers because I find that it's two steps forward, one step backwards. There has been advisory on the malfunction of these switches by the FAA some time back, and it was an advisory only. FAA is an regulatory authority for just like DGCA in US. How were the US media alerted to all these issues 3 days ago? Wall Street Journal carried it, John Ostrover carried it, the TAC, which is a aviation magazine, carried it. So something does not seem totally correct here. एक बार आप उसको रन करते हैं, दूसरी बार उसको आप कट ऑफ करते हैं। ये एक प्रोसेस एक फॉलो किया जाता है व्हेन द पायलट इज अटेम्प्टिंग टू रीगेन पावर इन द इंजन। इससे ये 100% डिसाइफर होता है कि कोई इंजन में इशू आए थे। The AAIB should have made public the CVR, entire CVR transcript, which by just informing people about one line, it leaves lots of questions hanging. It was the most appropriate thing for the AAIB to have said in the last line of the report that there are no safety recommendations for either Boeing or General Electric. That means you've literally, washed your hands, or you've decided that there is something else afoot here. ये रिपोर्ट में ये नहीं कहीं भी निकल के आया है कि ये ड्यूअल इंजन फ्लेम आउट हुआ है। हाँ, इसमें ये जरूर बोला गया है कि फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को बंद किया, ऑन किया। ये दोनों को एक साथ किया, नहीं किया, पहला लेफ्ट इंजन था, राइट इंजन था, ये था। द रिपोर्ट इज साइलेंट ऑन दैट। Frankly, the AAIB report raises more questions than it answers because I find that it's two steps forward, one step backwards. There are a lot of gaps. Perhaps they will be filled in once the investigation goes further. But I have a few issues. How were the US media alerted to all these issues 3 days ago? Wall Street Journal carried it, John Ostrover carried it, the TAC, which is a aviation magazine, carried it. So something does not seem totally correct here. That's number one. Number two, on the basis of the report itself, I feel the AAIB should have made public the CVR, entire CVR transcript, which by just informing people about one line, it leaves lots of questions hanging when they talk about the switches. The third thing that I found is I do not believe that when the investigation was not yet complete, it was the most appropriate thing for the AAIB to have said in the last line of the report that there are no safety recommendations for either Boeing or General Electric. That means you've literally washed your hands, or you've decided that there is something else afoot here. In that case, they should have been more transparent and come out with what they felt was the case. My reading is both didn't know how it happened. And if it's happened, that is where we need to investigate how it happened and why it happened. That can only happen with the DFDR and the CVR readouts. And we've been deprived of that. At least the CVR transcript should have been shared. The ministers or maybe the officials are saying that the complete report is yet to become a successful report. How much time does it take to come up with a detailed report, and how the investigation, the way investigation is going till now? What is your take on it? Well, a detailed report takes anywhere between 6 months to a year. I've known of some cases where it's even exceeded a year. They've taken special permission, dispensation. So it's not something that's going to happen in the next month or 2 months. This is going to be a very detailed investigation, lots of ramifications. And I'm glad that you pointed out that the Honorable Minister has said that it's only a preliminary report. In that case, why give anybody a clean sheet at all? That's my question. Why should we say that there are no safety recommendations? That line should not have even been there. Because unless it was forced on somebody, that's what I, as an Indian,
who's been in aviation for 40 years, I get that impression, and it's not a comfortable feeling. I think the government must answer that, and I do believe that, I was on another channel earlier, and I believe that, maybe there should have been a judicial inquiry into this alongside the AAIB. We have a bureaucratic team of bureaucrats who's looking at it, but perhaps a sitting High Court judge should have been, ordered to look into this. That would have given us absolute transparency. This is an event, a catastrophic tragedy that could impact, 1,200 787s flying around the world today. That's what we need to look at. So it's a very important thing. Yeah. So my last question, the technical snag. Do you suspect the technical snag? Because you said this report is raising question more than the answers. Do you suspect that? Well, the technical snag, if at all, if you call it a snag, would be the FAA circular of December 2018, which advises all airlines to check the fuel switches to see if they're inadvertently sliding back to cut off and run. That's all I could say. We don't know if more will come out. These are very preliminary inquiries and reports. They'll need to see why the fuel was shut off into the engines, whether there was something else. There's a possibility of something technical. We don't know. We'll have to wait and see. But, not very encouraging signs to start with. My last question, sir, just for a better understanding of the common people, how these fuel switches are worked and how this technical snag, if it happens, how does it work? So, what it is these fuel switches supply fuel to the engines on ground and in the air, and they disconnect also. So they have both operations. They're generally used on ground to start or stop fuel that goes to the engines. In mid-air, it's only used in case of a dual engine blowout, which in this case, dual engine flame out. We had both engines failing, so that's when it is actually used. It's a pull switch. It's not something that slides automatically. You have to lift it, spring loaded. It goes into an indent and then it falls back. So they are guarded switches with rails. So it just can't happen by mistake. So accidental switching is very unknown. It's unknown. I won't say ruled out. It's unknown. The other thing is that if by any chance it was related to the 2018 FAA directive, we would have known. But let's also remember, Air India has got 2 new engines on this aircraft in 25 and has replaced the throttle levers in 23. There's been no complaint on this aircraft of these switches. So it's anybody's guess where this is going. Basically, it is establishing what all happened in the cockpit, what all communication took between the pilot and the co-pilot, and through DFDR we have come through a conclusion that what all switches were moved or what all parameters were there during the crash. So we can basically call it a fact-finding report that it has established some fact, and also it has put some rumors to the rest regarding takeoff thrust not being produced or flaps not in takeoff configuration. So those rumors also had been put to rest with this preliminary investigation report. So what could be during the conversation that the pilots had denying they did not do anything with the switches? As again I said, this is a fact-finding report, and CVR recording has clearly established that the moment both the engines lost their thrust, the pilot captain immediately asked the co-pilot that did you cut the fuel shut-off valve, and he immediately denied no with an answer. So that indicates clearly that the fuel shut-off valve has not been turned off by the pilots intentionally. Seems more likely it indicates towards a technical malfunction. After the premiere, are we actually looking at with respect the investigation? First of all, we should congratulate our Civil Aviation Minister and Government of India to decide that this investigation will be held in India and will be conducted by India. Because previously there were some reports that these black boxes will be going to US, and that gets into the gray area, same company, same country conducting the investigation. So now all these countries, other countries also, they will be a participant in the investigation as an observer
and India will be conducting this investigation. And with this preliminary report that has come out within a month, it is a very positive step towards this investigation and a relief to the victims and their families that fair probe is being conducted. And regarding indications like what all can be the reason, that will come out only after the forensic investigation of all the reports and what all happened in the cockpit and the electrical systems. I'll just like to remind you, there has been advisory on the malfunction of these switches by the FAA some time back, and it was an advisory only. FAA is an regulatory authority for just like DGCA in US. So they issued an advisory regarding the malfunction of these switches. So that angles also needs to be probed. So, Government of India's final report, we Absolutely. should not reach on the conclusion. Absolutely. As I said, this is just a fact-finding report that what all happened in the cockpit and with the parameters and engine parameters, DFDR has been monitoring those. So now the role of the investigative agency is to investigate and come to a conclusion that actually what led to this fuel cutoff, whether it was a pilot error or whether it was a technical error. So that is the job obviously is of the Aircraft Investigation Bureau. फ्यूल कट ऑफ स्विचेस एक व्यूअर्स को समझना पड़ेगा. दीज आर स्विचेस प्राइमरीली गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर. बोइंग ने ये ऐसा डिजाइन किया है कि आप जब इंजन स्टार्ट करते हैं तब आप इसको यूज करते हैं और जब आपको इंजन बंद करना होता है तब आप इस स्विच को कट ऑफ कर देते हैं. तो दो मोड्स हैं इसमें, रन और कट ऑफ. अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर आप इसमें कहते हैं कि बड़ा अनयूजुअल है कि आप इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं अटेम्प्ट, एक बार आप उसको रन करते हैं, दूसरी बार उसको आप कट ऑफ करते हैं, ये एक प्रोसेस एक फॉलो किया जाता है व्हेन द पायलट इज अटेम्प्टिंग टू रीगेन पावर इन द इंजन. इससे ये 100% डिसाइफर होता है कि कोई इंजन में इशू आए थे, पायलट ने वो रिकॉग्नाइज किए थे. देयर आर वेरी सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट. इसमें आपको एक चेकलिस्ट फॉलो करनी होती है. पायलट के आगे एक स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन में वो उसको बताता है कि ये इंजन आपका गया है, वो उसको रीस्टार्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है. देखिए, इसमें एक बहुत अहम मुद्दा ये है सर, दैट आपको ह्यूमन फैक्टर्स भी देखना पड़ेगा. पायलट्स आर ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे. उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है एंड दे मूव अकॉर्डिंगली. ये कोई एक मन चाहा एक्सरसाइज नहीं होती कि आपने इंजन स्टार्ट कर दिया, बंद कर दिया. ये पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है. तो उसमें अगर वो रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू गेट द इंजन बैक. नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट टाइम कितना क्रिटिकल था इसमें. 400-600 फीट अबव ग्राउंड लेवल अगर जहाज है आपके पास, यू आर टॉकिंग इन सेकेंड्स, यू आर नॉट टॉकिंग इन मिनट्स ऑल्सो. ये पूरा कुछ सेकेंड्स की एक्सरसाइज है. तो उसके दरमियान पायलट अपने एक्शंस कर रहे हैं. ऑल्सो वो एटीसी को भी कॉल कर रहे हैं उस पूरे तरीके में. सो दे आर वेरी एक्सपीरियंस पायलट्स. ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था इन दोनों पायलट की जोड़ी का, ऑलमोस्ट 9000 घंटे थे इनके पास. तो दिस वाज नॉट देयर फर्स्ट फ्लाइट. दे वर वेरी, जिसको कहते हैं, कॉम्पिटेंट टू फ्लाई दिस बोइंग 787. सर, क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है कि दोनों इंजन है उसको फ्यूल सप्लाई जो है दोनों इंजन को एक साथ मिली हो गया? क्या आपको लगता है किस तरह से? देखिए, ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें आपके ड्यूअल इंजन फ्लेम आउट अगर हुए हैं. जैसे मैंने कहा, रिपोर्ट अभी थोड़ी सी साइलेंट है. ये रिपोर्ट में ये नहीं कहीं भी निकल के आया है कि ये ड्यूअल इंजन फ्लेम आउट हुआ है. हाँ, इसमें ये जरूर बोला गया है कि फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को बंद किया, ऑन किया. ये दोनों को एक साथ किया, नहीं किया, पहला लेफ्ट इंजन था, राइट इंजन था, ये था. द रिपोर्ट इज साइलेंट ऑन दैट. जहां तक आपका सवाल है कि फ्यूल, कि कैसे ये अगर फ्यूल दोनों इंजन का फ्लेम आउट एक साथ हुआ नहीं हुआ, ये रिपोर्ट में सामने नहीं आया है. दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अगेन, इसमें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन में जब जाएंगे तो ये जरूर चीजें निकल के आएंगी कि क्या ये फ्यूल की वजह से हुआ, क्या ये ह्यूमन एरर था, क्या इसमें कोई और ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व था. ये सारी चीजें निकल के आएंगी रिपोर्ट में. सर, आर सच क्रिटिकल स्विचेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सीडेंटल एक्टिवेशन और मैकेनिकल मैलफंक्शन? सी, जो इसमें मैन्युफैक्चरर ने इसको एक स्विच को डिजाइन कर रखा है. फ्यूल जो आपके स्विचेस हैं, इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है. इनएडवर्टेंटली अगर आप सोचें कि अगर आपका पैर लग गया या आपका हाथ लग गया या इसमें गलती से आपका कोई पुश या पुल आपसे होता है, तो दीज स्विचेस विल नॉट
गो ऑटोमेटिकली ऑफ। ये बड़े गार्डेड स्विचेस नहीं हैं। देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी, स्विच भी कई किस्म के होते हैं, पुश पुल स्विच होते हैं, गार्डेड स्विच होते हैं। तो ये स्विच गार्डेड स्विच नहीं था, ये एक इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म जरूर डिजाइन किया गया था, प्लस इसके साथ में एक प्रोटेक्शन दी गई थी कि अगर आपका साइड से कोई इम्पैक्ट आता है स्विच में, या कहीं किसी तरह से कोई FOD जिसको हम कहते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, या किस तरह से कुछ अगर किसी कारणवश ये हिलता है, कुछ होता है, तो ये बंद नहीं हो सकता स्विच ऑटोमेटिकली। इसको आपको एक्चुअली में इसका लॉक खोलना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये स्विच कट ऑफ भी होएगा। And sir, does this look like a design flaw, a mechanical glitch, or something more complex? देखिए इट इज टू प्रीमेच्योर टू से दैट इट इज अ डिजाइन फ्लॉ। बोइंग 787 विश्व भर में उड़ रहे हैं। बोइंग का ये एक बड़ा सक्सेसफुल एक मशीन रहा है, लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट इसको कहा जाता है। ये लंबी फ्लाइट्स में ये काफी यूज किया जाता है। जहां तक बात आपने कही कि ये कोई कॉम्प्लेक्स इशू है, देखिए एक पायलट को ह्यूमन फैक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें उसके लिए सिचुएशन अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी सीरियस जॉब। एक में बहुत अहम मुद्दा इस पूरे एक्सीडेंट को जब मैं स्टडी कर रहा था वो निकल के आया कि एक हमने ह्यूमन फैक्टर्स में एक चीज पढ़ी है कि स्टार्टल इफेक्ट। देखिए अगेन दिस कैन बी अ सिचुएशन वेर इन ड्यू टू स्टार्टल इफेक्ट, ये एक ऐसी चीज होती है जो कि इनएडवर्टेंटली पायलट या बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स या बिकॉज ऑफ सम अदर एस्पेक्ट्स पायलट चीजें कर देता है। देयर इज वन पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि ऐसा हो सकता है कि इस जहाज में, जो कि इस रिपोर्ट में अभी बिल्कुल भी सामने नहीं आया, इट इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस, दिस इज माइट बी अ थ्योरी, कि कुछ इलेक्ट्रिकल फेलियर इस जहाज में पूरी तरह से हुआ। इन दैट सिचुएशन द पायलट मस्ट हैव थॉट कि ये कोई इंजन की टेक्निकल इशू हुआ है। पायलट ने उस तरीके से अपने इंजन्स को दोबारा से स्विच ऑन ऑफ करने की कोशिश करी। ये मैं कैसे सब्सटैंशिएट कर सकता हूं इस बात को कि आपका जो रैम एयर टरबाइन है, जिसको कहते हैं टरबाइन बाहर निकल के आया है, वो इस रिपोर्ट में भी आया है दैट द रैट इज आउट। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन फैक्टर एरर ऑल्सो, बट अगेन इट इज टू प्रीमेच्योर टू से दैट। अभी इस रिपोर्ट का कोई भी फाइनल आउटकम नहीं आया है। वो आगे जिस तरह से और डिटेल्स में जाएंगे तो ये पता लग पाएगी बात।